Thank you so much, all of you, for taking out time. Monday, this is not Monday, this is a Wednesday afternoon and Mumbai traffic. And you guys have come, thank you so much. Thank you so much for being here. Insurance is something which is very close to my heart. And I'm sure it is very close to all of you because I have some way or the other interacted with all of you. And I think it has been a very important part. We've conducted a personal finance survey and I want to show what came out of that when we spoke to people and asked them about insurance. Let's have a look at that. Here's Sanjay. He's a software engineer from Mumbai. Sanjay is savvy. He invests in insurance to create a secure future for himself and his parents. That's why he has 6 to 7 insurance policies. But Sanjay belongs to a minority. And why is that? Look at the government data. It says insurance penetration in India is only 4%. And our own Money9 personal finance survey shows that just 19% of families buy insurance for savings. The number is higher in rich states like Karnataka and Maharashtra, but not in poorer economies like Bihar and Jharkhand. But the overall trend is worrying. It shows that India believes in saving more than ensuring a secure future. It's only if more people follow Sanjay's example and invest in insurance that the future is likely to be secure. If you want to learn how, then the panel on insurance at the Financial Freedom Summit hosted by TV9 Network and Money9 is what you should tune into. बीमा पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये ना निवेश है, ना बचत है, ना खर्चा है, ना टैक्स सेविंग का जरिया है, लेकिन हम सब बीमा को यही समझते हैं, ये निवेश है। हमारे सर्वे में भी यही पता चला कि लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस मतलब फिनेंशियल सेविंग, और ये सेविंग नहीं है बल्कि आपके जीवन के सुरक्षा कवच है जिसकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका बुरा वक्त होगा, चाहे वो जीवन का बुरा वक्त हो या स्वास्थ्य का बुरा वक्त हो। कोविड ने बहुत हद तक समझाया हमें कि बीमा कितना ज़रूरी है। फिर भी जब हम IRDA के वो आंकड़े देखते हैं जिससे इंडस्ट्री तो वाकिफ़ है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% का है, जबकि पिछले 10 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमने 10% का ग्रोथ एवरेज में लेकर चल रही हूँ देखा है। अराउंड 57 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी क्या ये लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं? और ऐसे में 2047 का इंश्योरेंस फॉर ऑल का गोल का लक्ष्य हम कैसे अचीव करेंगे इंश्योरेंस फॉर ऑल? So let's start the discussion with my esteemed panelists because I think they would throw in more light than me. Priya, thank you so much for being here. Since you belong to Manipal Signa Health, I want to understand from you, as far as health insurance is concerned, the biggest issue is the out-of-pocket expenditure which an Indian has to go through. What is stopping the Indians from buying health insurance? Why is the health insurance penetration so low? Because when I spoke about 4.2 penetration of insurance, it had both life and general. And when we see standalone health insurance penetration, it's around 1%, little bit above 1%. Right. So what is it that Indians, why are Indians not buying? What is it that is stopping Indians from buying health insurance? Sure, great. Thank you, TV9, and thank you to you. We've been part of multiple conversations over the last couple of years, and indeed such a powerful vision to have health insurance for every citizen of India by 2047. Underpinned with the fact that insurance penetration has been low, especially for non-life, as you rightly said. एंड कपल ऑफ फैक्टर्स, ये कोविड में हमने देखा, कोविड में कैसे एक्सपेंसेस हुए, हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बढ़े, बहुत सारे लोग जो अपर मिडिल क्लास, अदर पीपल हु हैड गुड फिनेंशियल काइंड ऑफ स्टैंडिंग, they suffered during the time of COVID with the kind of claim size, the amount of expenses that were made. So हम हमेशा सोचते हैं, हमने बात भी करी, पहले भी आपने बात करी है, 60 to 75% of the total expenses are out of pocket. तो इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा? क्या challenges हैं? इसमें सबसे बहुत बड़ा एक challenge mindset.
बेसिकली आज मैं हेल्दी हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मैं घर खरीद लेता हूँ, मैं गाड़ी लेता हूँ, मैं बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ. सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस कि you are fit today and God forbid everybody should remain fit, but when that health and health issue will strike, that awareness and that knowledge and that ability to really have that visibility कि क्या हो सकता है, so awareness drive करने की ज़रूरत है. Second factor is trust. थर्ड फैक्टर इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैंने पैसे तो दिए इंश्योरेंस के, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला साल भर में. दैट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस ऑल्सो रियली होल्डिंग इट बैक. सो आई वुड से ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट दैट कि मैंने पैसे लगाए और वापस कुछ नहीं आया, वो थॉट प्रोसेस थोड़ा मतलब अवेयरनेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है. अभी इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अबाउट फॉलिंग सिक, गोइंग बैक इनटू हॉस्पिटल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिट केयर, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेलनेस. आपकी सारी डॉक्टर के बिल्स जो हैं, आपके सारे फिटनेस केयर का जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारा सब कुछ इंश्योरेंस आजकल कवर करता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स नहीं, OPD, आपके डॉक्टर कंसल्टेशन, डेंटल, दिस थिंग, टेलीमेडिसिन फॉर दैट मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव it comes under the insurance cover. तो It's all about awareness. प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है. पिछले 10 साल में बहुत नए प्रोडक्ट्स हैं, especially last 5 years with the changes in regulation, regulator being so pro customer, बहुत सारे positive changes हैं, awareness की ज़रूरत है. Mr. Naidu, I would come to you with my next question. As Priya pointed out, there are a lot of product. In fact, the entire last year we saw regulator taking lots of such steps wherein a use and file was introduced, So all of you got a lot of flexibility in bringing out new and innovative product. If there are product, and there is a need for insurance, why are people still not buying insurance? Do you think they're buying? What is your take? Okay, I think, thank you for this question, Priyanka. I think it's a very interesting gathering that we have put together, and congratulations on your DataCoin app. Okay, very quickly, the life insurance penetration is under 4% today, 4.2%. And if we were to really look at this figure a little deeper, the penetration in non-metro market is even starkly down. Absolutely. It is That's under what I 1%. pointed out, yeah. Okay. So what are the big challenges? What are the big challenges? One, I think today insurance and simplicity don't go with each other. Okay. So insurance product baat karte hi, people find it highly complicated. They think that ye hame samajh mein nahi aa raha hai, right? So product simplicity is one aspect that I would like to touch upon. Number two is distribution. Okay, how are we reaching out to these customers to go ahead and provide them the right solution? Today, with the entire advent of digital, there's a major digital explosion that is happening. But are people willing to engage digitally to buy insurance? Or are they looking at a phygital model with a physical and digital enterprise, right? So, product simplicity, product reach, in terms of going deeper into markets, and product variety. If you just look at insurance companies today, everybody is now in the same garb of providing similar products. Okay? A product which is very, very suitable to a Sanjay kind of individual, right, in metro. Is it, the same product which is great for a Suresh kind of individual in deep, district? Okay? So I think all these aspects, have to be addressed one by one. I think there's a significant progress that's happened in the market in the last 10 years, like Priya is saying. The regulator is, pushing the insurers, easing the regulations through use and file to create better, simpler, easily understandable, affordable products. I think there's a great movement that's happening, but there's still a long way to go, as far as the penetration is concerned. Now with the new advent, Har Ghar insurance by 2047, the kind of thrust that the now regulator is putting in, truly the developmental role in terms of actually giving out targets to insurance companies, okay, and giving boost to distribution intermediaries in terms of giving licenses, 9 people, They're 9 still different on insurance papers. companies, They've a lot still of not things. passed the bill yet. It's still in but the process. I think great, draft regulations have come in, and we have known the regulator But the draft by now. proposals will remain to be draft unless it turns out into Priyanka, look at the number of drafts that have come in the last, it's a contentious topic. Yeah. Look at the number of drafts that have come in. Shubhro is here, Priya is here, everybody is here. Look at the number of drafts that's come in the last 5 years, and tell me the number of drafts that have not been passed.
Okay, Yeah. so it's a contentious this debate topic. is totally different. I would bring in Shubhrajit here as well. Shubhrajit, you tell me. I mean, as Venkatesh and Priya pointing out, there are lots of things that needs to be done. But what is it that you see? One thing you think this should be sorted out first and foremost, and so that you could achieve the goal of insurance for all. I think 2047 insurance for all is a very aspirational goal, and we all strive for that. No doubt about that. But it's easier said than done, and you all need to work very coherently towards that. I think let's go back to the first principle. Why people don't buy insurance? I think they have touched upon that. I will go a little deeper onto that. That it's a product which doesn't give you instant gratification. We as a consumer tend to get something which gives us a gratification. You invest in FD, you invest in MF, you will get something in return. The return may vary from 5, 6, 4, 5, 6 to 10, 11, 12, something in return. The payoff in insurance is extremely asymmetric. I will give an example. By the way, India is one of the most competitive global market in terms of term insurance product. I think the price in India is one of the competitive in the global level. If you pay, and it depends on the age and tenure of the policy, if you pay 20 to 30K, you get a 1 crore of insurance coverage. See the asymmetry in the payoff, 25, 30K and 1 crore. But still, if we think that, by the way, if nothing happens to the person, nothing will be returned, and that return, because it's either at less 25, 30,000 gone, or you get a 1 crore, extremely asymmetry. This requires a deep financial understanding, culture, education, and financial literacy. So any foundation of a financial planning, that's everybody knows here that insurance is the foundation of a financial planning you do. But just saying that wouldn't suffice. I think, and I'm very glad that you are organizing session. This kind of a session, awareness at a school level, to my mind, all the bodies coming together, all the ecosystem coming together, government, regulatory, industry, all need to work together to achieve the goal. And I personally have a strong belief, I am very passionate also, that it is possible if all we come together and start with educating ourselves. Now, so to my mind, that there will be obstacles in the journey, but if we work together and figure out, I think there's a lot of product propositions, currently there is a plethora of products. I think the key is to make ourselves more aware. I will give an example how in the COVID period it has turned the way. It has opened the eye actually. Industry, I just wanted to quote a number. Industry has settled 78,000 crores of, life insurance industry settled 78,000 crores of claims. And think about the person who, by the way, deciding to take spend 25K for a 1 crore, finally decided to take a 25 crore, and something has happened to the family. His family is financially sad. Absolutely. So that's that's one the thing, the core. lack of understanding of the product and the return aspect जो शुभ्रजीत ने कहा कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा अगर हम खरीद रहे हैं इंश्योरेंस, ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो लोग पूछते हैं, और मुझे लगता है अगर उनको ये समझा दिया जाए कि ये रिटर्न आपके लिए नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के लिए है, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको उधार लेकर के आप उधार के जाल में ना फंस जाए, उसके लिए ये समझ जो है वो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। हम Money9 और TV9 के अलग अलग प्लेटफॉर्म में अभी लाइव हैं। हमारे लाइव ऑडियंस में अगर कुछ सवाल पूछेंगे तो हम उन्हें भी शामिल करेंगे, पर अब मैं जाना चाहूँगी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आर्या के हेड हर्ष रुंगटा जी के पास, और इनके साथ तो बीमा पर मेरी इतनी सारी बातें हुई हैं। अब रुंगटा सर, बीमा पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए क्या है सबसे बड़ा चैलेंज? मुझे लगता है भारत में, जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि रिटर्न नहीं मिलता, वैसे ही एक समस्या है कि हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा बार्गेन करना चाहते हैं, हमें लगता है हमें जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है वो ठीक नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रुंगटा सर, आपको लगता नहीं है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए बीमा को और सस्ता होने की ज़रूरत है? पहली बात तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और आई थिंक ये मंच देने के लिए। और मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस बहुत ही अहम हिस्सा होता है कोई भी किसी भी आदमी के लिए उसकी फिनेंशियल प्लानिंग में, और उस तहत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कॉस्ट की अभी आपने बात करी तो आई एम एक्चुअली अमेज्ड, ओके,
कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कॉस्ट में इतना काम किया है। ओके, जैसे अभी कहा कि 30,000 रुपये में आपको 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हैं। हमारे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो सो कॉल्ड विकसित देशों में रहते हैं, वो आके यहाँ आके उनको पॉलिसी जब लेनी होती है उनको इंडिया में रहना होता है, तो एक इंडिया में जब आते हैं तो वो टर्म पॉलिसी भी लेते हैं और हेल्थ पॉलिसी भी लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, तभी वो पॉलिसीज बिक रही हैं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि एनआरआई आकर के अगर खरीद रहे हैं तो उनकी जेब, उनकी कमाई एक इंदौर में रहने वाले सुरेश या एक बैंगलोर में रहने वाले रमन के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। वो रमन और सुरेश तक हम बीमा पहुंचा पा रहे हैं क्या? हम बीमा पहुंचा पा रहे हैं क्या? कि मेरे ख्याल से ये जो एक इम्पोर्टेंस है कि बीमा, जैसे इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये कैसे, तो इसका मेजरमेंट मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री यूज कर रही है, और मैं कई सालों से ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आज तक इसका जवाब मिला नहीं कि व्हाई आर वी मेजरिंग प्रीमियम टू जीडीपी एज पेनिट्रेशन। ओके, प्रीमियम आपने इतना कम कर दिया। ओके, टर्म पॉलिसीज बेचने लग गए, प्रीमियम कम हो गया, लोग ज्यादा दिन जीने लग गए, लॉन्गलेविटी टेबल्स बढ़ गए, प्रीमियम कम हो गया, ज्यादा लोग पॉलिसीज लेने लग गए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने लग गए, तो जैसे जैसे बेस बढ़ता है प्रीमियम कम हो गया। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रीमियम कम हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं करता है पेनिट्रेशन नंबर्स में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो बता रहा है कि पेनिट्रेशन कम हो गया, जबकि आपको जो करना था, मेन काम इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या है, आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। सुरक्षा प्रदान करना ये मेन काम है कि सेविंग्स जुटाना, और ये दोनों के बीच की जो कश्मकश है, इसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। जैसे सभी ने कहा, प्रोटेक्शन के लिए पिछले 5, 7, 10 सालों में पहले जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ करता था कि इंश्योरेंस यानी प्रीमियम दो, क्लेम नहीं मिलेगा। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में खास करके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। टर्म में तो क्लेम्स ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन वो पिछले 5-7 सालों में उसमें बहुत काम हुआ है और वो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हुई हैं। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री सही स्टैटिस्टिक पे फोकस नहीं कर रही, वाई कांट वी, आई मीन सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप समझिए अगर भारत में 2 ही लोग हैं, टोटली 2 ही लोग हैं, ओके, दोनों की इनकम 5 लाख है, उसमें से एक ने ले ली पॉलिसी, 50 लाख की पॉलिसी ले ली, उसके 50 लाख की पॉलिसी के 15,000 रुपए लगे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय लेट्स अज्यूम 1 करोड़ है, तो वो 0.15% उसका पेनिट्रेशन हो गया हमारे करंट मानके से। ओके, और उसका डेंसिटी लो तो वो वैसे हो गया। अगले साल पॉलिसी की कीमत आधी हो गई, जो कि हुई है। ओके, और दोनों ने ले ली, तो जो काम करना था वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कर दिया। समझ गई। आप कह रहे हो कि पेनिट्रेशन को हम जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे को बदलने की जरूरत है, राइट? और इंडस्ट्री को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका मेन काम प्रोटेक्शन देना है कि सेविंग्स करना है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही। फाइन, ये वेरी क्लियर। इंडस्ट्री के जो बैठे हैं मेरे साथ स्पोक्सपर्सन्स, और स्पोक्सपर्सन ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर रहे हैं ये लोग, इनसे ही पूछते हैं। प्रिया, आपको क्या लगता है कि क्या हम जिस आईने से देख रहे हैं कि ये है पेनिट्रेशन, वो गलत है? क्योंकि यही बात यहाँ पे रुंगटा सर उठा। हेल्थ इंश्योरेंस में वो प्रॉब्लम नहीं है, या आप लाइफ इंश्योरेंस की बात, ये लाइफ इंश्योरेंस। आपको क्या लगता है क्या किए जाने की जरूरत है? नहीं तो बहुत बढ़िया, उम्दा कॉन्वर्सेशन। बेसिकली कोई भी क्लास ऑफ इंश्योरेंस अब हम देखें तो अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो तो एकदम सही बोल रहे हैं सर। बट द फैक्ट इज, मैं नॉन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगी, आई रिप्रेजेंट द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री।
ओवर द इयर्स हमारा काम क्या है? हमारा काम है रिस्क कोहॉर्ट्स बनाना, एक स्टैंडर्ड, कोई कंडीशंस हैं, कोई कंडीशंस नहीं हैं, उस हिसाब से रिस्क कोहॉर्ट्स बनाना, उसको प्राइस करना, उस हिसाब से प्राइसिंग प्रीमियम्स रखना और टेबल्स रखना, और एक्सपीरियंस जब आएगा उसी हिसाब से प्राइसिंग का असेसमेंट करना। तो जितने ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे उतना रिस्क कम होगा, इंसिडेंट्स कम होगा, एंड वी वांट टू गिव द बेनिफिट बैक टू द कंज्यूमर्स, टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। हम जो मेजर करते हैं, हम दोनों पैरामीटर्स में इंडस्ट्री मेजर करती है, नंबर ऑफ लाइव्स एज वेल एज द टोटल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम। तो दोनों एंगल्स हम मेजर करते हैं और दोनों को ट्रैक करते हैं, और हमारा लक्ष्य जो है कि हर लाइफ को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। इट इज अ लिविंग बेनिफिट, इट्स नॉट अ डेथ बेनिफिट। जब आदमी जिंदा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, ना कि ओनली हॉस्पिटल में जाने के लिए, बाकी सारे खर्चों के लिए, एंड देन फिनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, द अर्निंग मेंबर एंड द फैमिली इज अश्योर्ड। लेकिन लोग नहीं खरीद रहे ना उस रफ्तार से जिस रफ्तार से खरीदना चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस तो पेनिट्रेशन बढ़ा है, 2%, 2.2% से 4.1% हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। ऑफ कोर्स लाइफ का अब मैच्योरिटी आ गया है। सो एज अवेयरनेस इज ग्रोइंग इन, एंड माय फेलो पैनलिस्ट मेंशन लॉट ऑफ प्रो कंज्यूमर मेजर्स फ्रॉम IRDA and real development activity. So I am very, very hopeful that we'll see great speed and momentum as we come forward. ठीक है, अब वेंकटेश आपसे मैं शॉर्ट में चाहूंगी कि हमें इस सेशन को क्लोज करना है। आप क्या एक वन बिग चेंज जो आप सोचते हैं कि कंपनी के एंड पर होना चाहिए टू 2047 के गोल तक पहुंचने के लिए? So a bright business idea is what you're seeking. Yes. Okay, a bright business idea is, if you look at it, something like a data coin. I think the biggest problem that the insurance industry is facing, availability of the right data. With the UID invention and the UPI penetration, with Aadhaar integration, if the entire insurance industry, and I'm speaking for both my colleagues here from the health insurance and life insurance, okay, if there is a single data source in terms of saying actual health of people, I think the way we can rethink insurance is going to change in a very, very big way. Imagine, the industry had a full view of what tablet the person is taking for what disease and what kind of lifestyle he's doing. Integrated data. Our entire insurance aspect can change. Penetration can change, reach can change. I think data that's one is money, yeah? Data is the new Data money. is money. And I think Money9's data coin will be quite a helpful tool for you people. Absolutely, absolutely. Okay, Shubhajit, last word from you. What do you think that one thing that you want to do and you think you should do, the industry should do to reach the target of insurance for all? Okay, before that, I'd like to say last 5 years, actually the industry, as every panelist is saying, has done a lot in terms of customer proposition, whether it is a product, pricing the cost, claim settlement ratio. Life insurance company, the claim settlement ratio is on average 98% plus. We are aiming to have a 99% plus claim settlement ratio this year. Persistency, the renewal of the book has going up, so on and so forth. But is it good enough for the 2047? No, it requires more. I think one of the big way that we have a great products. We require a distribution to go to the last mile. For example, if I have to offer to the last mile, suppose someone cannot afford 25,000 for a 1 crore, the person can afford 5,000, can I get a 20 lakhs insurance would be good enough for the person. I need to reach out to the person. I think the digital would help a lot in terms of piggy riding the digital ecosystem currently with all the payments and all the ecosystem will be significantly game changer. Data, I think, is a part of the digital ecosystem. And whether, so 3-4 things. We have a product, we have a customer onboarding and the process, the risk management, because the asymmetry of the payoff, there is a lot of fraudsters and we need to, and finally, the reach. Digital ecosystem, and that's how we are very bullish about, will help to override, come up with all these 4 systems to have a much greater reach. But having said that, the way we need to all involved in terms of awareness, because awareness, only these without a large scale awareness will not serve. So you ask for a 1, I will give 2. One is the digital ecosystem and the awareness at the ground level. Thank you so much for this discussion. Let's hope that we achieve the target which is being set, 2047, insurance for all, and the company, the regulator, all of them are tirelessly working towards that goal. वक्त बताएगा हम उस टारगेट तक पहुंचेंगे या नहीं। गौरव, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा
TV9 कन्नड़ा के एडिटर आर श्रीधरन को प्लीज वो मंच पर आए और हमारे जो मेहमान हैं इनको सम्मानित करें मेमेंटो देके प्लीज। May I have the mementos, please? थैंक यू ऑल। प्लीज अब अपना अपना स्थान ग्रहण करें आप। एक जोरदार तालियों के साथ इस पैनल का एक बार फिर से स्वागत हो जाए। शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू श्रीधरन।